the class. So each class can take an average of 1 mark. Sometimes my voice lagging. Okay, fine, Siddhika, not a problem. एक नया मसला लेकिन आप लोगों ने ले आया है ईयरफोन चार्ज वायर ईयरफोन ले ले. If you have a laptop or something, then hopefully it will be having audio jack where you can plug in the wired. Okay. Mariam is also here. Assalamu alaikum, Mariam. Am I audible? Yes, sir. How are you, Mariam? I'm fine, sir. You have not been attending classes, no? No, I attended the previous class. You were there in the complex reaction, elementary reaction. Yeah. On there? last Wednesday, right? Yep, last Wednesday. Yeah, I was there. Yep. I was there. You were there. Where are your friends? Zeba, Noha, बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया है Noha. Noha is in your class, right, Mariam? She's in a different section. But she's a friend, right? Yeah. And same with Zeba. Zeba is in the same class, right? I think. Yeah. Zeba? Zeba is actually in vacation. कहाँ गया है? कहाँ गई है? घर? India? Yeah, she went to India. What about Noha? Noha, I don't know. Noha से की बात नहीं होती है. No. Hello, hi Anna, how are you? Annapurna, am I audible? Yes, sir. How are you? Fine, thank you, sir. So that's really nice. Under 6 minutes, all of you, almost the complete class is here, so we can start on time. So, write integrated rate equation. That is the heading. Integrated rate equation. Okay. And another way of writing this topic's name is the types of order of reaction. So in detail, we are going to learn about the zero order reaction and the first order reaction in detail. Okay, what are we going to learn? Zero order and first order. So first we will write number 1. Zero order reaction. In zero order reaction, we have A2 reactant to certain products. Now, we can write the differential rate equation, which will be rate, it is equal to minus dA upon dt. So we call this rate, what is this? This is rate, right? We call this differential rate equation. So the rate is expressed in terms of differentiation. Now we can also write rate like this. K into the concentration of A to the power 0. So how did we know it is 0? Because we are studying a zero order reaction, we can write A to the power 0. Makes sense till here, Jasola, please tell me? Yeah, now what we can do, now since this also is telling us about rate, this part is also, this expression is also telling us about rate, we can equate both of them. So we will get minus dA upon dt. It is equal to K into the concentration of A to the power 0. Now, because anything to the power 0, it will be equal to 1. So we can note, and what we can write, dA is equal to dt को उधर लेगा, minus को भी उधर लेगा, ठीक है? Minus K dt. Now what we will do, we will integrate on both sides. Integrate on both sides.
So we will integrate BA, okay, is equal to minus K will be a constant, so it will be outside the integration side, minus K and the integration of dP. So integration differentiation, I hope you know this from physics, or maybe if you have maths, they would cancel each other in very layman terms, and we will get here A, which will be equal to, again, integration differentiation, they will cancel each other, and I will get minus K into T. Now, since this is an indefinite integration, we will also get a constant that is equal to C. Does this make sense till here? Yes or no? Please tell me. Here you're not audible. What are you saying? Part तुम बता देंगे. Can anyone hear properly? No, sir. All of you understood till here? Anna, Mariam, Sadika, Harsha, Taha. Yes, sir. Yes, sir. जी ये बताएं. हाँ, you want to explain me the last part? Yes, sir. This plus C part, right? Yes, sir. ये आवाज ही नहीं आ रही है ये, बिल्कुल ही नहीं आ रही है आपकी आवाज, बहुत ही धीमी है. जोर से बोल, देखिए कनेक्शन ठीक है आपका. हाँ तो ठीक है, प्लस सी के बारे में पूछ रहे हैं और आस्किंग अबाउट प्लस सी. यस सर. प्लस सी में प्लस सी जो है आपका जब एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, यू आर अवेयर अबाउट दैट. तो फिर हम क्या समझाएं इसमें? whenever we do any indefinite integration, जब तक अगर लिमिट्स नहीं रहती है तो प्लस कांस्टेंट एक आता है ना, प्लस सी आता है, राइट? याद आया? बस वही है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सी, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सी. उसके लिए बिल्कुल कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए एक ही राज है उसका, जिस साइड कांस्टेंट है उस साइड के वेरिएबल को जीरो कर दो. ठीक है. तो एट, ये तो कांस्टेंट है, टाइम वेरिएबल है, एट टाइम इट इज इक्वल टू जीरो. व्हेन टाइम इज जीरो, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी ए नॉट. व्हाट इज ए नॉट? द इनिशियल कंसंट्रेशन. जो भी आप लेना चाहें, whatever concentration you want to take, that will be the concentration at time zero. So we will plug in these values and we will get, instead of reactant amount of what is A at time zero, it is A naught. It is equal to minus K into time is zero into zero plus C. So basically we have got what is A naught. A naught is the value of. So from here we get the real equation for the first. So what we will do, instead of C we will write A naught and we will get A, it is equal to A naught minus K. A is equal to A naught minus K. Does this make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Now, here each and everything will have certain definition. इसको बहुत ध्यान से आपको समझना. This is the remaining concentration of. इसको बता देते. This is initial concentration. K is rate constant. T is the time. कितने टाइम तक आपका वो रिएक्शन हुआ है. Now, when some time is passed, the reaction will occur. The concentration of reactant, it will be decreasing from initial to some concentration. तो ये जो आपके पास यहाँ पे A है, that is telling you about the remaining concentration of A. Remaining concentration of A. ठीक है. Please copy this down. Raise your hand when you are done. Is it visible for everyone? नहीं visible है ना, तो you can zoom in the screen itself. ठीक है. स्क्रीन में zoom कर लीजिए, आपको दिख रहा है.
Raise your hand once you're done. Waiting for Siddhika, Tama, and India. Just waiting for Siddhika. Siddhika आपके पास सवाल है. For a reaction. For a reaction. A given B. With A, it is equal to 2 moles per liter per second. Calculate the amount of थोड़ा हार्ड लिख दिया हमने. चलिए ठीक है. Calculate the amount of A reacted in 10 seconds when initial concentration of A is 50 moles per liter. ठीक है. I have written the equation also. सारी values दी हुई हैं. Set your answers. Very easy calculations. Okay. So please send your answers once you're done. Yes, very good question. By the way, you can send the answer in Zoom chat also. You know, you need to send it in WhatsApp. Zoom chat will be the okay, Anna. Anna, can you please read the question once again?
try to read the question and then try to see what you have calculated. You will understand. Mariam, waiting for you. Mariam, Taha, Siddiqa, Yahya. Yahya, once again, same thing. Read the question and try to see what you have answered. Try to read the question and then see what you have answered. Yes, Taha, that is correct. Waiting for Siddiqa and Mariam. Mariam, हो रहा है कि नहीं हो रहा Mariam? कितना टाइम लेना चाहिए Mariam? हो रहा है नहीं हो रहा Mariam? Sir, I'm trying. ट्राइंग क्या कर रहे हैं भाई? सारा डेटा दिया हुआ, प्लीज प्लग इन करें यार. ट्राइंग का कोई सेंस नहीं बनता ट्राइंग का Mariam. डांट सुनिएगा बहुत ज्यादा. ठीक है? K की वैल्यू दी हुई है, T की वैल्यू दी हुई है, सब कुछ कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट सम आंसर. वैल्यू प्लग इन करना है, नीचे सब कुछ तो दिया हुआ है. ट्राइंग क्या मतलब होता है? नहीं, कैलकुलेशन इतना टफ है कुछ. नो नीड ऑफ ट्राइंग. प्लग इन द वैल्यूज और फिर आंसर बताइए क्या आ रहा है. Siddhika, what about you? Siddhika, what about you? Why you are not getting it, भाई मेरे? यार K की वैल्यू डालो, T की वैल्यू डालो, इनिशियल कंसंट्रेशन सबको लिखा दिया हमने, हर एक चीज क्या होता है. आई एम नॉट गेटिंग इट. भाई स्टार्ट करो लिखना. You cannot solve certain problems in your head directly. ठीक है? So just imagine this is that question. Do you know the value of A naught, Siddhika? Siddhika, do you know the value of A naught? Yes or no? Tell me. Do you know the value of A naught? अरे भाई अभी लिया तो लिख नहीं रहे हैं. यस सर, टाइप कर पा रहे. मरियम का मरियम भाग गई. यार यू गाइस आर इन द थर्ड चैप्टर. ठीक है, तो अब इतना तो आ जाना चाहिए ना, वैल्यू प्लग इन करके आंसर निकालने वाली चीजें. तो यही आपका आंसर पता चला. क्या मिस्टेक है आपके आंसर में? यही. एंड अन्ना, No, sir. No, अन्ना sir. फोटो नहीं, फिर से पढ़िए. पढ़िए पढ़िए या 10 बार पढ़िए. सवाल पूछे, देखिए आपने क्या निकाला है, पूछ क्या रहा है और आपने निकाला क्या है. सदी का नॉट आंसर. सदी का इसी तरह रहा तो क्या ही फायदा वो क्लास करने का. वीडियो लेक्चर देखिए, रिकॉर्डेड लाइव करने की जरूरत ही नहीं. जल्दी देखिए अन्नपूर्णा नहीं है. जल्दी देखिए आपने निकाला क्या और पूछा क्या गया है. यस अन्ना, व्हाट डिड यू कैलकुलेट? टेल मी, आपने क्या कैलकुलेट किया है? अन्ना, व्हाट डिड यू कैलकुलेट? 30. अरे भाई, व्हाट इज दैट? Um, the remaining concentration of A. एंड व्हाट इज आस्क्ड? Or the amount of A. Yeah. अमाउंट ऑफ ए. हाँ, द अमाउंट ऑफ ए Reacted. दैट इज रिएक्टेड. और आपने क्या कैलकुलेट किया? इट इज रिमेनिंग. मेक सेंस? ठीक है. Yes, sir. सो दैट्स व्हाई तो यहाँ पे मैं लिखा भी दिया है ना. मतलब कि वैसे हर साल का ही है, कुछ बच्चे रहते हैं तो हमेशा ये चीज भूल जाते हैं. मतलब उनको चाहिए कि चार, कुछ बच्चे आप जिस का आप निकाल भी नहीं पा रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, देखिए आपको निकालना है रिएक्टेड. क्या कीजिए, टोटल में से अनरिएक्टेड, टोटल में से अनरिएक्टेड को माइनस कर दीजिए. ठीक है. तो रिमेनिंग मतलब अनरिएक्टेड मतलब रिमेनिंग. रिमेनिंग निकाल लेते हैं ना पहले. ए इट इज इक्वल टू ए नॉट क्या होगा?
A naught will be equal to 50 minus K, what is K? 2. And into time क्या है आपके पास 10 seconds. Now you can see that the constant ये term second, ये term second match कर रही सारी units are matching, है ना? If the time was given in minutes, then we would have to convert it to seconds in order to match the unit of K. अभी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? This is equal to 50 minus 20, that is equal to A. तो A concentration कितना हो जाएगा 30 मोलर, ठीक है? तो reactant कितना होगा? This will be equal to 50 minus 30, that is equal to 20. 20 mole per second, that is 20 mole. 20 mole, this is the reactant amount. तो आपको एक और खूबसूरत बात बताते हैं केमिस्ट्री के. This question could be asked like this also. Yeah, you got the answer ना? आपको मिस्टेक समझ में आया ये आप? Yes, sir. बस that's it. Now you will understand the meaning of the rate constant. For a reaction A to B with K is equal to 2 moles per liter per second, calculate the amount of A reacted in 10 seconds. तो जो KT पार्ट है ना, KT सॉल्यूशन क्या होता है इसका? Amount reacted. This is only valid for the zero order reaction. It is equal to minus. It is equal to KT. K कितना था आपके पास 2 into time कितना आपके पास 10, that is equal to 20 moles per second, 20 मोल, है ना? ये जो आपके पास ये जो इनिशियल में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देखें आप, अगर हम ऐसा लिखते तो चलता ना, रिमेनिंग इज इक्वल टू इनिशियल माइनस रिएक्टेड. तो रिमेनिंग के लिए हमने क्या लिखा? ए नॉट इज इक्वल टू इनिशियल, सॉरी रिमेनिंग के लिए हमने क्या लिखा? ए. इनिशियल के लिए क्या लिखा? ए नॉट माइनस के टी. So this KT is telling us about the reactant. Can you see that? Yes or no? Please tell me. बात समझ में आ रही है? ठीक है. So what is this KT telling us about? KT is telling us about the amount of A reacted in T seconds. ठीक है. जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से लग रहा है लिखने से लिखिए. जब हम नोट वगैरह सब कुछ लगा देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. अच्छा, you understood this officially? यहाँ पे तो आके बच्चे ऐसे परेशान हो जाते हैं, सर इनिशियल कंसंट्रेशन तो दिया ही नहीं. हाँ बताएं. So the second way is only valid for zero order reaction. Yep. Okay. Okay. लेकिन जीरो ऑर्डर में भी कहाँ से बनता है? कुछ नहीं बनता है. मतलब इसमें फिर वो बच्चे का सही आंसर आ जाता जो, या तो आई मीन व्हाट आर द आंसर्स दैट द स्टूडेंट कैन गिव? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन यही आता है. एक ऑप्शन आप लोग ये करते 8, दूसरा ऑप्शन आपके पास होता दोनों को ऐड कर देते 12, तीसरा ऑप्शन दोनों को डिवाइड कर देते तो 5, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो 20. तो आपके दिमाग में जो उस टाइम आ जाता आप वही कर देते. तो डिपेंडिंग ऑन दैट 21 1/4 चांस रहता या सही आंसर का तुक्का मारने बैठते आप. ठीक है. राइट दिस डाउन, देन वी आर गोइंग टू राइट नोट. Done everyone? Is please tell me. Yes, sir. Amount reacted is equal to KT. ठीक है. That's fine. Amount reacted for zero order reaction is independent of the initial concentration. इस देखिएगा एक कंसेप्ट है हाफ लाइफ. इसको वी कैन शो T1/2 और T50%. Yes, sir. What is half life? Time taken.
for the 50% completion of reaction. हो गया ना, सब लिख लिया आराम से, यहाँ से देखते जाइएगा। एड हाँ, कहाँ भाग गए थे आप मरियम? हाँ हाँ मरियम, किधर भाग गए थे आप? Sir, my brother had to do something on the device I'm using. डिवाइस फोन यूज कर रहे हैं क्या आप? No, I was using my iPad. फिर I'm suggesting like most many people they use iPad. लेकिन हम सजेस्ट करेंगे ना कि if you have laptop तो laptop में attend करिए classes because laptop has fewer distractions. और किसी को काम भी नहीं पड़ता लैपटॉप, कोई आपसे मांगेगा नहीं कि लैपटॉप दे दो थोड़ी देर के लिए. If you have a laptop at try to attend the classes in the laptop just because of the reluctance of people to ask laptop or because of fewer distractions. तो सवाल मिस कर दिया, आप बोल नहीं सकते भाई को जो भाई सवाल हो रहा है यहाँ पे. तो important देखिएगा. Sir, it was urgent. That's why I couldn't do the question also. अर्जेंट था या सब खैरियत? Yeah. His school website, he sees it from my iPad. Okay. So I think he wanted to see something. So that's why he was pressuring me to leave the meeting. छोटा 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 भाई आपका बड़ा भाई है? Chota bhai. छोटा भाई आपके सर के ऊपर चढ़ा रहता है, उसको क्या क्या देखा उसने बताइए तो अपनी वेबसाइट पे. क्या देखा, क्या बुला के लाइए उसको. बुला के लाइए जरा, बात करते हैं उससे. क्या देखा होगा छोटा छोटा जो वो भी स्कूल की अभी जैसे एक घंटे बाद. अरे देख मरियम, Sorry, your voice is breaking. is it breaking for everyone? Is my voice is breaking for everyone? Yes, sir. Yes, it's breaking a lot. We are breaking the day. नहीं नहीं सर, बस 50-50 ज्यादा भी नहीं. आपकी ये आवाज नहीं आ रही है क्या? इस सर वजह से उतनी भी नहीं. लॉट उतनी भी नहीं. क्या देखना था उसको मरियम? आपके भाई ने क्या देखना था, क्या देखा उसको? उसको बोलिएगा मेरी क्लास में निकल रही सारी चीजें, ठीक है ना? Yes, बोलिएगा sir, I will tell. मेरे, हाँ मेरे केमिस्ट्री सर बहुत डांट, ठीक है? क्या बोलिएगा, Yes. क्या बोलिएगा? मेरे केमिस्ट्री सर ने हमको लास्ट टाइम इतना डांटा कि हम रोने लगे. क्या बोलिए? Okay, sir. या फिर बोलिएगा नहीं तो सर से परमिशन लो. चलिए देखिए, आई होप दैट इट वाज नॉट अर्जेंट. अर्जेंट तो नहीं था उतना
जो भी उसने देखा वो 1 घंटे बाद भी देख सकता था, करेक्ट? Yes, sir, I will tell him. अगली बार दो तमाशा मालूम सिखाऊं मैं, पढ़ाई कर, ठीक है? तो एट टी व्हाट यू आर डूइंग प्लीज एट टी 60% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट, तो 50% रिएक्टेंट रिएक्ट किया होगा और 50% बचा होगा, तो द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू ए नॉट बाई टू, इनिशियल का आधा बचा होगा, ठीक है? और रिएक्टेंट अमाउंट क्या होगा? रिएक्टेड अमाउंट, रिएक्टेड अमाउंट ही आपका आधा होगा, ए नॉट बाई टू रिएक्ट कर गया, ए नॉट बाई टू बचा होगा, एंड वी हैव जस्ट सीन रिएक्टेड अमाउंट को क्या लिख सकते हैं? 80, 80 इट इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू, ठीक है? और यहाँ पे टी क्या होगा? स्पेसिफिकली रिएक्टेड अमाउंट कब का है? जब टी हाफ हो। आई विल राइट ए टी हाफ, तो यहाँ से टी हाफ क्या आ जाएगा? ए नॉट बाई टू, कॉपी कर लीजिए सर। रेज योर हैंड ऑल्सो डन वेटिंग। अच्छा, वैसे बजट कौन सा टेस्ट हो दिया ना आपने, ये दो तीन नोट लिखना है आपको और उसका सवाल भी कंप्लीट करना है, ठीक है? तो यू टेक सम स्पेस, Okay, sir. वेटिंग फॉर मरियम एंड सिद्दीका, ताहा, यहिया, अंडरस्टूड दिस? यस और नो प्लीज टेल मी। अन्ना, Yes, sir. यस? Yes, sir. Yes, sir. एक और चीज होती है 300%, 300% मतलब टाइम टेकन और 100% कंप्लीशन, 100% कंप्लीशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ वही सिंपल है यहाँ पे देखिए, अमाउंट रिएक्टेड कितना हो जाएगा? आपने जितना लिया था सारा का सारा रिएक्ट, वंस ऑल ऑफ इट इज रिएक्टेड विल से 100% कंप्लीट हो चुका है। अमाउंट रिएक्टेड विल बी इक्वल टू ए नॉट, अब ए नॉट को हम ऐसे लिखेंगे ना, वो ब्रैकेट बता देगा, ठीक है ना? बराबर ब्रैकेट से आपको समझ में आ जाना चाहिए, दैट इज कंसिडर ना ए नॉट। अमाउंट रिएक्टेड को क्या लिख सकते हैं आप? यू कैन राइट दिस एज ए इनटू टी हाफ, नहीं, ए इनटू टी 100%, ए इनटू टी 100%, दिस विल बी इक्वल टू ए नॉट। तो टी 100% कितना हो जाएगा? ए नॉट बाई के, ठीक है? ए नॉट बाई के। और अगर हम इसको ऐसे देखें, ये आपके पास क्या है? ए नॉट बाई के, so I can write also T 100% is equal to 2 into A naught by 2K। सेम आंसर हो जाएगा ना? ए नॉट बाई क्या आ जाएगा? देखिए जरा, 2 से 2 कट जाएगा, टी 100% इक्वल टू ए नॉट बाई 2, क्या ख्याल है? Yes, बोलो sir. भाई, नहीं दिख रहा क्या है ना? एंड व्हाट इज ए नॉट बाई 2K? इट इज द टी हाफ। कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड once you're done।
सबका हो गया let's take the graphs for zero order जल्दी से जल्दी ना इसको रिवाइज करते रहिएगा लाइक व्हाट एवर यू आर टेकिंग बिकॉज़ काफी डेंस है लाइक जनरली इट इज इजी चैप्टर अंडरस्टैंडिंग के एतबार से बट डेंस इन द सेंस दैट हर एक टॉपिक से आपके पास सवाल आ सकता है हर एक टॉपिक से एक आपको ग्राफ दे देगा बोलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ कौन सा है दे कैन गिव एनी ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा बाय द वे ईच एंड एवरी ग्राफ विल बी क्रिएट बिकॉज ऑफ एन इक्वेशन एक इक्वेशन की ग्राफ बनती है तो ए नंबर ग्राफ है आपके पास r is equal to a into a to the power 0. So from here we will get a graph between rate and initial concentration, that is A naught. So rate जो है concentration पे depend ही नहीं कर रही है because a to the power 0 will be equal to 1. So we'll get a graph that is a straight line. ठीक है D A is equal to A naught minus K. Here एक साथ बना लीजिएगा तीन साथ बनाइए ना देखते रहिए बस अगर आप एक बनाने जाएंगे दूसरे का आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगा राइट कुछ कर दिया जाएगा इसका now this is graph which is kind of like y is equal to ये आपके पास x है so here we are having the initial concentration sorry remaining concentration और यहाँ पे आपके पास टाइम ठीक है एंड कुछ इस तरह से नाउ मोस्ट ऑफ द बुक्स दे डोंट टच दिस बिकॉज़ ये टच होना चाहिए why because at a particular time the reaction gets to completion ये यहाँ तक जो remaining concentration of A है वो जीरो हो जाएगा ठीक है तो भले ही आपको शायद जो एग्जाम वगैरह में ऐसे दे दिया जाएगा बट एक्चुअली इट शुड बी लाइक दिस एक्चुअली इट शुड बी लाइक दिस एक पर्टिकुलर टाइम पे ये रिएक्शन खत्म होगी so we should complete it कि remaining concentration of A will come down to zero अच्छा ये जो आपके पास पॉइंट है ये जो आपके पास पॉइंट है दिस पॉइंट दिस विल टेल यू अबाउट द इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज A naught और यहाँ पे जो आपके पास लूप होगा दैट विल बी योर माइनस t जैसे हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको y इज इक्वल टू x के साथ हमेशा क्या रहता है m रहता है तो दिस इज द m पार्ट है ना एंड A naught क्या है आपके पास A naught इज द इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप ऑफ ग्राफ है यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू माइनस ठीक है so they will give you this graph they will ask you what is the order of this particular reaction या फिर जिसके लिए भी ग्राफ बनाई गई है उसका ऑर्डर क्या now another is a graph between the T half and initial concentration that is A naught upon 2T A naught upon 2T और यहाँ पे आपके पास ग्राफ बना रहे T half और यहाँ पे आपके पास A naught ठीक है now as you can see if the A naught will increase the T half will also increase this is kind of a graph which is y is equal to mx y is equal to mx में क्या हो the graph will pass through the origin because intercept any and you can see the slope is also positive तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा slope negative तो ग्राफ नीचे की ओर जाता है like if you increase y but if you increase the x y will decrease okay in this case as equal to y is equal to mx and the slope will be equal to
1/2. Okay, please draw this graph, raise your hand. Waiting for someone and here. Examples technique. Examples technique. Examples of zero order reaction. Okay. I will write the examples, but Harsha, you're done, na? Harsha? Yes, sir. I will give you the examples, but in a general overview, yeah, the reaction which has catalyst, the reaction ऐसे ही बस पढ़ने के लिए ना लिखना नहीं पड़ेगा, समझने के लिए which has catalyst or generally zero order reaction. और फिर कुछ फोटोकेमिकली इनिशिएटेड रिएक्शन होता है, जैसे इट रिक्वायर्स लाइक जितना आप उसमें लाइट टेकिंग लाइक इफ यू रेडिएट द रिएक्शन मिक्सचर उतना ज्यादा रिएक्शन, अगर आप रेडिएट कम करेंगे तो रिएक्शन कम होगा, तो वो सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। एक तो ये वाले हो गए सारे आपका व्हाट डू दे से catalyzed reaction, एंजाइम से कैटालिसिस हो जाए, लाइक इफ देयर इज एन एंजाइम व्हिच इज फास्टनिंग द प्रोसेस, the biological processes हैं those are catalyzed by or they are fastened by enzymes, or if you have a metal catalyst, okay, so all of these are going to be what, all of these are going to be Z type reaction. What do we say, क्या कहते हैं इसको, zero order. तो zero order reaction में अगर आप देखना चाहिए examples, then you can write पहले तो आपके पास एग्जांपल आएगा, फॉर एग्जांपल कि हाँ H2 plus Cl2 ठीक है, so this they will combine in the presence of, they will combine only in the presence of H, the presence of light, it will give you 2x. so अगर आप जितना लाइट देते रहेंगे उसको, जितना आप ज्यादा लाइट देंगे तो ज्यादा वो क्या हो जाएगा, वो रिएक्शन रहेगी, और अगर आप उसको कम लाइट देंगे तो रिएक्शन कम होगा। अगर हमारी
इसी तरह से आपके पास एक और रिएक्शन है इन विच यू हैव द डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये आपके पास अमोनिया है, is getting dissociated into N2 plus CH2 H2 के साथ समझ में आ रही है। और नाउ अब ये अमोनिया जो है ये रिएक्शन जो है मतलब कैटलिस्ट है एवरीथिंग। यहाँ पे प्लैटिनम कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है एज ए कैटलिस्ट एंड अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर यूज होता है 1000 के करीब 1000 के करीब होता है 1000 केल्विन 1000 और 1100 केल्विन के करीब प्लैटिनम इज ए कैटलिस्ट इससे आपको ये याद रहे। एंड एंड हाई प्रेशर भी होता है, काफी ज्यादा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर। अगेन यू हैव अ रिएक्शन N2O। N2O जो आपको देता है दैट गिव्स यू नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस अगर करें तो ये इस तरह से जगह पर एंड here also you will have hot platinum, ठीक है, and high pressure। और क्या hydrogen iodide का dissociation happens in the presence of fuels as a catalyst and there is a high pressure। ठीक है, so this will that's the so these are the examples। Generally you can see it is either photocatalyzed, it is enzyme catalyzed। ठीक है, enzyme catalyzed का reaction enzyme catalyzed एक process होता है। Sir, Write can this you down। read out what is the catalyst in the last reaction? Gold, Okay, sir. gold। Write this down, raise your hand once you are फिर ऑर्डर कहानी यही तक है। और नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट है बट समझ लेंगे इसमें तो ज्यादा कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। वैसे आप यू डोंट नीड टू रिमेंबर दैट डेरिवेशन व्हाट यू आर डूइंग। आपको जो बेसिकली याद रखना दैट इज द एंड कि आपके पास इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या आता है। अवेयरनेस लर्न अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस दैट गोइंग फ्रॉम ए एंड वी आर गेटिंग सम प्रोडक्ट बी और यहाँ पे जो रेट होगा it will be still the differential rate equation will be minus dA upon dt। I'm writing dA upon dt directly तो हम ऐसे ब्रैकेट से लेंगे और rate can be written as k into the concentration of A to the power A to the power तो लगा ही देते हैं तो बहुत लगाना पड़ेगा A to the power। So now we can equate both of these rate, it will be equal to minus dA upon dt is equal to A into the concentration। We will take the variables one side. So concentration of A is a variable. So उसको एक side ले आते हैं. So I will get something like this. dA upon A that is equal to minus A dt। ठीक है, तो माइनस भी उधर चला गया, dt भी उधर चला गया, दिखते रहिए सब लिखेगा हम। Now we are going to integrate on both sides. Integrate while we integrate on both sides we will have integration of इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 upon A। ठीक है, और ठीक है, it will be equal to integration of minus A integration of dt। अब तो यहाँ से आपको समझ में आ गया 1 upon A का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज इक्वल टू ln A होता है, मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, भूल गया होंगे लेकिन मान लीजिए क्या ये होता है ln होता है नेचुरल लॉग।
log to the base e is equal to minus kt plus c. तो फिर से वही कहानी at p8 is equal to 0, a will be equal to a naught. हमारे पास आ जाएगा ln, हम सीधा a लिख रहे हैं, ln a is equal to minus a into 0 plus c. So I can say that ln, sorry, a naught यहाँ पे लेंगे ना, a is equal to a naught, remaining concentration. ln a naught will be equal to c. ठीक है, remaining concentration क्या हो जाएगी? ln a naught. Now we can plug in this value, and I will write ln a equal to ln a naught minus a. ln a naught minus a. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें kt को उधर ले आते हैं, ln पे ले आते हैं, get kt it is equal to ln a naught. जब ऐसे अगर आप देखें ना तो a is equal to a naught minus kt is the previous thing, मतलब जीरो ऑर्डर के लिए ये था हमारे फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आ गया ln 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 ln. ठीक है, ये आप जस्ट एडेड ln याद करने के लिए बस ln a naught minus ln a, ln a naught minus ln a. अब यहाँ हम kt को क्या लिख सकते हैं? kt could be written as ln of a naught upon a, है ना, because log a upon b is equal to log a minus log b. Log a minus log b, you can say log a upon b. These are the properties of log. Hopefully आपको पता होगा. Now what we can do, we can change this ln to log, और ये क्या हो जाएगा? kt will be equal to 2.303 log of a naught by a. I hope you are not writing with. अब आराम से आप इस चीज को समझ के लिखिएगा, जहाँ अगर दिक्कत है तो बताइए. ये सर छोड़ा बढ़ते हैं यहाँ की तरफ. यहाँ फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है. तो जब t is equal to t half and a naught by 2. ठीक है, t is equal to a naught by 2. तो हम t की जगह t half लिखेंगे, फिर b equal to
2.303 डिवाइड बाई k, है ना। देखिए ये को जब नीचे ले गया है, सेम थिंग, log of, ठीक है, log k नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना है, k नॉट बाई 2, k नॉट आंसर हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, एंड वी विल गेट हाउ इट विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k, तो रहेगा ऐसे कैसे, log ऑफ 2, log 2 की वैल्यू जो होती है उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2.303 से, यू विल गेट 0.69 divided by k. This is the value of t. As you can see, the t half, it is not dependent. In the formula of t half, you don't have any initial, initial concentration पे वो depend करता ही नहीं है. T half order reaction, not on the initial concentration. यानी कि अगर आप समझिएगा इस बात को ध्यान से, बिल्कुल समझिएगा, आप अभी 100 पे हैं, 100 से आप कहाँ जाएंगे, हाफ क्या होगा 100 का 50, 100 से 50 तक आने में मान लीजिए आपको लग रहे हैं 10 मिनट्स, तो 50 से 25 तक भी आने में आपको कितना लगेगा, 10 मिनट्स। 25 से आपके पास 12.5 आने में भी आपको कितना लगेगा, देखिए इनिशियली आपके पास 100 है, ठीक है, 50,000 है, 25,000, धीरे धीरे रिएक्ट हो रही, कंप्लीट हो जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए ये 50 आया, मतलब इस वक्त टी हाफ, 25 मतलब टी 3/4, 75% कंप्लीट हो गया, 25 बचा है, 75 कंप्लीट है ना, टी 75%, ठीक है। और इस पर क्या जाएगा, टी 75 के बाद आगे क्या आएगा, 82%, ये दोनों को आप समझिए सर, ये टी 50% है और ये टी 75%, सही है यार, 100 था, 100 से आपने टी कर दिया, Yes, sir. right? So 50%, 75%. अब you can see that 75% is equal to twice of 50 तक आने में कितना 10 मिनट, 75 तक आने में 10 और 10 20। अगर आप 100 से 75% कंप्लीट करें, when you want to complete the reaction 75% twice 50%, ये बातों को लिख लीजिए जरा। और इस बात से आपको यहाँ पे भी क्वालिटेटिवली समझ में आ रहा होगा कि रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। और ये बात समझिए कि आपका घर, आप मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी, यू नो व्हाट, आपको एक चीज बताते चलिए, छोड़िए नहीं इसको, एक फिलोसॉफिकल पैराडॉक्स होते हैं, आप लोग को ऑल ऑफ यू आर अटेंटिव इज ऑन किसे, Yes, sir. सारे अटेंटिव है ना, ध्यान से, बहुत अच्छा पैराडॉक्स। आपको पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी जाना है, ठीक है, पॉइंट ए से लेके कहाँ जाना बताइए, ए से लेके कहाँ जाना है, तो बोलो भाई B, sir. B. Point. बी जाना है, पॉइंट बी जाना है, ठीक है। ए से बी जाने के लिए यू विल हैव टू कम टू द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, Yes, sir. बिना मिड पॉइंट पे आए थे आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, उसको मान लेते सी, अच्छा सी और बी, अगर आपको बी तक पहुंचना है देन यू विल हैव टू कम टू द मिड पॉइंट ऑफ डी आल्सो एट सम पॉइंट, आया ना। Yes, sir. और डी से बी में जाएंगे तो यहाँ पे भी एक मिड पॉइंट आएगा, उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा आपको पहले, इसको ई पॉइंट ले लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में भी एक मिड पॉइंट आएगा, इन दोनों के बीच में भी एक मिड पॉइंट आएगा, इसके भी बीच में एक मिड पॉइंट आएगा। आप अगर करते चले जाएं इस तरह से, देन at each and every point before B there will be some half, आप हमेशा किसी ना किसी हाफ के इंतजार करेंगे, यू विल नेवर रीच बी थ्योरेटिकली स्पीकिंग। अगर आप सोचे पहले ए और बी का हाफ पहुंच जाते, फिर
जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका हाफ हो जाता है, फिर उसके बाद उसका हाफ हो जाता है। तो ये हाफ तो चलता चला जाएगा, विल यू एवर रीच बी? बन रहा बात, क्या कहना चाह रहे हैं आप? व्हाटएवर वहां से लेके बी तक अगर हम जाएंगे, किसी भी पॉइंट को आप पकड़ ले, डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड बी उसका एक हाफ होगा। पहले आप हाफ में पहुंचिएगा। अरे समझ में आ रही बात? आ रही है? Yes, sir. यस सर। तो हाथ में बढ़ा दिया क्या हमने? समझ में आ रही बात ना? अगर हाफ का हाफ का हाफ का हाफ का हाफ तो चलता चला जाएगा, कभी बी पहुंच ही नहीं पाएंगे थ्योरेटिकली स्पीकिंग। आवाज नहीं आ रही? Yes, यस sir. सर। इस बात पे सर कहा आपने, ये तक पहुंच नहीं पाएंगे, इस पे असर कहा कि आवाज नहीं आ रही है, इस पे असर कहा? बी तक नहीं पहुंच पाएंगे सर उस पर तो। हाँ, बी तक नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसी कंसेप्ट मैथ्स में। इंफिनिटीज जो होते हैं ना, लाइक हम लाइक व्हाट वी टॉक अबाउट इज इंफिनिटी, इंफिनिटी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफिनिटी। यू हैव, जो मैथ्स पढ़ते हैं उन्होंने सेट पढ़ा होगा। So there are different types of infinity. This is something known as countable infinity. For example, numbers, whole natural numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You can count them. अगर आपको बोले जाए कि like you have line, मतलब वैसे शैतानी इस की तरह आपको टाइम मिलता है, ताक कयामत आपके पास टाइम, like till the end of the days we have time. Count कीजिए. Whole numbers are countable infinities. Okay, that you can count. Person marry है? You got the point of countable infinity? Yes or no? यस सर। ठीक है, लेकिन एक फिर से नंबर लाइन ही है, सी को मान लेते हैं आप 1 और इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, अब 1 और 2 के बीच में एक बीच का नंबर आएगा 0.5। ठीक है, अब उसके बीच में एक बीच का नंबर आएगा, उसके बीच में एक बीच का नंबर आएगा, उसके बीच में एक बीच का, इफ यू डेप्थ ऑफ दैट, उसके बीच में उसके बीच में उसके बीच उसके बीच में उसके बीच में क्यों हुआ, वो अनकाउंटेबल है। मतलब खत्म की तो बात छोड़ दीजिए, दैट इज बाय डेफिनेशन इट इज अनकाउंटेबल। यू कैन नॉट इवन काउंट इट। जैसे 1 2 3 4 तो आप काउंट करना चालू करके हाफ का हाफ का हाफ हाफ का हाफ का हाफ 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 जाइएगा। तो व्हाट काइंड ऑफ मैथ के अंदर 1 से 2 के लाइक 1 2 3 4 5 6 7 दिस इनफिनिटी इज स्मॉलर दैन द नंबर प्रेजेंट और द फ्रैक्शन द डेसिमल प्रेजेंट बिटवीन 1 एंड 1 से 2 के बीच में जो नंबर्स प्रेजेंट है, that is more than the countable number. इन दोनों के बीच में जो नंबर्स प्रेजेंट है, that will come under uncountable infinity. और ये 1 2 3 4 जो पूरा नंबर लाइन जाएगा, this will come under countable infinity because we can count, and the counting की जा सकती है. We not end the counting, but we can count it as countable infinity. And this uncountable infinity ये बड़ा सेट है rather than the countable infinity. That countable infinity is smaller set as compared to the uncountable infinity. 1 से 2 के बीच में ज्यादा नंबर है बनिस्बत 1 2 3 4 5। बच्चे कह रहे हैं सर इतने पैशन से केमिस्ट्री पढ़ा देते सर हम लोग को, इतने पैशन से मैथ पढ़ा रहे हैं, बट मैथ इज गोइंग टू इवॉल्व और केमिस्ट्री का यूज नहीं। केमिस्ट्री तो मतलब क्या बताएं, इट इज यूजेबल सब्जेक्ट। वी डू मैथ्स फॉर द सेक ऑफ मैथ्स। So what I was trying to explain is qualitatively also you can understand that this first order reaction is theoretically unending. ये हाफ का हाफ का हाफ का हाफ तो चलता ही चला जाएगा, हर चीज 10 मिनट लगती जाएगी। सो रिएक्शन खत्म ही नहीं होगा। 12.5 का भी हाफ होता है, उसका हाफ का भी हाफ होगा, उसका हाफ का भी हाफ होगा, हाफ का हाफ का हाफ तो चलता चला जाएगा, राइट? It will take infinite amount of time. It will take infinite amount of time to complete the reaction. This was qualitative explanation. अब आते हैं quantitative explanation की कैसे। If I talk about T 100% के, T छोटा सा पार्ट हो जाएगा, T 100% से ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप देख लीजिए प्लीज पहले T 100%। जब T 100% होगा, then यहाँ पे हम कह सकते हैं T को हम क्या लिखेंगे, T 100% and
remaining amount will be equal to 0. So P 100% is equal to 2.303 divided by K log of K naught upon remaining concentration 0. And देखिए A upon 0 तो undefined होता है mathematically speaking, ठीक है? A upon 0 होता ही नहीं, कुछ नहीं होता. Like generally say it is infinity, but it tends, मतलब it is undefined mathematically. But अगर हम नाम देना चाहें, if I want to tell it what does it mean, ठीक है? A upon 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? You can say that it means it. Log of infinity will be again infinity. Infinity into 2.303 divided by K, it will be again infinity. आप देख रहे हैं कि 100% is equal to infinity, कभी खत्म ही नहीं होगा. बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Stop here. और इसके साथ साथ एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं. First order reaction. Never goes for some initial. Raise your hand, student. $75% can be also 3 by 4, 75. Even similarity here. 1 by 2 just 50% है, वैसे 3 by 4 75%. हमने बोल दिया आपको लिखना नोट्स में, आपने लिख दिया. 3 by 4 हमें लिखे जाएंगे, ठीक है? तो बता दिया आपने, उसमें कहीं पे लिख दिया. Sir, can zero order reaction be completed? देखो जरा, बताया तो है. कितना टाइम लगेगा जीरो ऑर्डर को कंप्लीट होने में, बताइए हर्षद. P 100%. कितना हो, क्या वैल्यू होगी? 300% की वैल्यू आएगी, क्या आएगी? इक्वल टू इसको देना क्या है? ए नॉट अपॉन कोई बोलो भाई. A naught upon K. ए नॉट अपॉन थ्री. क्या लगता है कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, बताइए. ए विल बी अ नंबर दैट इज ए, तो एक नंबर होगा दैट इज नॉट जीरो, है ना? ए विल बी आल्सो अ नंबर दैट इज ए नॉट विल बी आल्सो अ नंबर दैट इज नॉट जीरो. अगर आप डिवाइड करें तो टाइम निकल जाएगा, टाइम कंप्लीट हो जाएगा. मतलब व्हाट इज द शेयर? Yes, sir. पर सीधा सवाल कर देते हैं कि ग्राफ हम लोग नेक्स्ट बार को देखेंगे.
छोटे छोटे सवाल हैं दो। एग्जाम्पल्स हमने मतलब क्या बताया, वो निकाल देते थे ऐसे ही इधर, छोटे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं तो या फिर एनसीईआरटी में पढ़ने के कह देते थे। बस कभी भी सवाल ऐसे आता नहीं, जैसे एफिशिएंसी 20 नंबर परसेंट का रिएक्शन दे दिया एंड दे आर आस्किंग वेदर इट इज जीरो, मतलब कौन सा ऑर्डर है बताने के लिए। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर जनरली नॉट आस्क्ड। तो नोट्स का वो सेगमेंट है मतलब आपका लास्ट ईयर से निकाल के, अदरवाइज आई यूज्ड टू टेल दैट एक पैराग्राफ है थोड़ा सा ऊपर लीजिएगा। तो सवाल आते हैं कि आई यूज्ड टू वर्बली डिक्टेट तो फोटोलिटिक तो दी कैटलाइज रिएक्शन, दोस आर जनरली जीरो ऑर्डर करके बातें करते हैं बस। बताया किसी का एक आंसर है अभी तक अंदर का, तो व्हाट इज दिस? ओके बढ़िया, मतलब यू कैन स्किप यूज द नोट्स, नोट्स का आप एक आंसर बता सकते हैं। यस करेक्ट, बढ़िया बढ़िया। आवाज आ रही है बढ़िया आपको? Yes, sir. आप सना सेवा नाम है ना आपको, तो कहा सेवा से कब बात की आपके पास? Um, she replies to my texts sometimes, but like now she's busy. क्या मैं किस नहीं Yes, सॉरी व्हाट, बिजी इन व्हाट? she's traveling. दिन भर रहा है मतलब रुकती नहीं है क्या वो? शी मस्ट मतलब वो कहीं तो स्टे कर रही है, ट्रैवलिंग है क्या? कॉन्स्टेंटली शी इज ट्रैवलिंग और व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन क्या No, है, समझ में नहीं हो रहा। she went to India, like Hyderabad, and then she went to Kerala, and then she's like traveling in a car, and like she's going out every रोज ट्रिप कर day. रही है वो, रोज ट्रिप Yeah, कर रही है वो, yeah. किस खुशी में? So with her family. अरे भाई किस खुशी में रोज ट्रिप कर रही है वो ऐसे ही? सुनिए भाई, हमारी अच्छा है यार, रोज ट्रिप मार रहे हैं, बड़ा इंतजार करते हैं। ये अलग करेक्ट, संदीप का अलग करेक्ट, वेरी गुड। हर्षा में आ सकती है कि नहीं पे व्हाट्सएप पर? हाँ हर्षा करेक्ट, वेरी गुड। ये हाँ आई थिंक सबका आंसर आ गया। ताहा आप नहीं आ सकते? ताहा, ताहा का आंसर Send in the chat.
Send in the chat to whom? Learnivio. Oh, wait, sir. I send it wrong. दोनों गलत है भाई मेरे, दोनों गलत है। और छोड़ तो पकड़ने की ताकत तो कुछ देखो, सवाल पढ़ो। सेकंड वाला तो सवाल पढ़ो, सवाल नहीं पढ़ा आपने। और 25 नंबर के लिए आप नोट्स देखिए जरा। नोट्स बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे? कहा तो देखो, सबसे पहले नोट्स बना रहे हैं। Yeah, yes, sir. राइटिंग फिक्स था, देखो जरा। तो सामने रखने ना होगा तो हो या लिलाई बदला में डाकू करते हैं आपका। दिखा कुछ, दिखा कि नहीं दिखा? कहा कहा Yes, sir. So 26th one is C. 26 का क्या होगा? 26 का फिर गलत है, फिर गलत है। Sir. पढ़िए सवाल, पढ़ता पढ़ो सवाल पढ़ो। And the order of okay, the half-life period of for a zero order reaction. एक सेकंड, आपने जो आंसर किया है वो किसके लिए किया? 25 के लिए, 26 के लिए? देखिए जरा। So the 26th one. Yes, sir. Answer for आपने the 26th one. ठीक है, सवाल पढ़िए सवाल। The half-life half-life period. The half-life period for a zero reaction for a zero order reaction is equal कौन सा to ऑर्डर? ठीक ठीक, कौन सा ऑर्डर? a zero order reaction. कौन सा ऑर्डर? 3 बार बोलिए, कौन सा ऑर्डर? कौन सा ऑर्डर? A zero order reaction, sir. एक बार और हमको पूछिएगा, कौन सा ऑर्डर? Zero order reaction. हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, देखो Okay, sir. It's D. सर इट इज डी। तीन ऑप्शन में सही होगा आंसर आपका। 25 का क्या होगा? 25 का बताइए क्या होगा? 25th का 2 होगा. सही है। Sir, 2. कहाँ से होगा यार? नोट्स देखो तुम। Sir, 1+1. अरे 1+1 कहाँ से 1+1 भाई? हैं सेकंड साइड में क्या 1+1 बताएंगे आप? 1+1 ऑर्डर पूछा, ऑर्डर रिएक्शन देख के कभी भी ऑर्डर आप नहीं बता सकते, सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होता। आप ये देख रहे हैं कि वन पहले ही बताया ना, इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आप पूरे नोट्स देखने के लिए तो फिर आप नोट्स देखो ना, आज की नोट्स देखो भाई, देखो बताएंगे नहीं आंसर। नोट्स में लिखवाया, नोट्स दिखाया आपको, इंग्लिश आती है काफी है Yes, sir. आंसर। हाँ क्या होगा बताओ? Sir, 1. No, I mean 0. Yeah. या क्या? एबीसी बताओ, एबीसीडी बताओ। Okay. C. 1+1 2, 1+1 0। ये मिलता आपको, जीरो मिलता, जीरो। चल दैट्स इट फॉर टुडे, है ना? आज के लिए इतना ही, और बाकी की डाट आप लोग नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को सुनिएगा, ठीक है? बाय द वे थोड़ा ध्यान दीजिए, कहा है ना, ठीक है? आंसर आपका दोनों सही होना चाहिए था ना, कहा Yes, sir. है ना? दोनों सही होना चाहिए था ना आंसर। What? Sir, I didn't understand. What do you say? I am saying both of your answers should have been correct, right? Yes, sir. है ना? मतलब एकदम ठीक कराया है भाई।